Hi guys, today we will study next important concept midpoint of a segment. है ना? Last lecture we studied the congruent segment and also we discussed question number 1 in practice set 1.2. After that we studied a midpoint of a segment. Question number 2, question number 3 in practice set 1.2 is depends on these concepts. So see here midpoint of a segment. We know that segment means what? Segment. Okay, segment means that two end points and points which is between these 2 points. All these union of points is called as a segment. So what is the exact midpoint? So point which divide given segment into 2 equal parts. This is a midpoint of a segment. So see here, if AMB, yes, how did it? M is betweenness of A and B. Okay, this symbol indicated that M is betweenness of A and B, and segment AM and MB are congruents. Then M is a midpoint of segment. Means that this midpoint divide given segment into 2 equal parts. See here, AM is equal to MB, and also we write it this AB is a half of AM as well as half of MB, means here half of AB. Okay, so M is a midpoint of AB. At that time AM is equal to MB is equal to half of AB in this way. Okay, so we studied question number 2 which is depends on this midpoint. Okay, they give here point M is the midpoint of segment AB. We write it point M is the midpoint of segment AB. Right? So if M is midpoint of segment AB, means that it's a segment AB and M is a midpoint. Okay, after that they give here AB is equal to 8. Find AM. AM find. So we know that AM is equal to MB is equal to half of AB. Okay, if M is midpoint of AB, at that time AM is equal to half of AB. So we write here this AM is equal to half of AB. They give value of AB is equal to 8. 2 1s are 2, 2 4s are 8. So AM is equal to 4 units. In this way we solved it. Here in the same way, question number 3. Point P is the midpoint of segment CD. We write it point P is the midpoint of segment CD. Segment CD means that here draw the figure. It's C, it's D, and point P is a midpoint. Means that we conclude that CP is equal to PD is equal to half of CD. है ना? अभी क्या दिया है उन्होंने यहाँ पर CP is equal to 2.5. They give here CP and ask that find CD. So CP is equal to half of CD. So CP is equal to 2.5. We write here CP is equal to half of CD. This 2 is transfer there. It's multiply these terms in this way is equal to CD. So 2.5 into 2 means that 5.0 is equal to CD. Means here CD is equal to 5 units. In this way we solve some examples which is depends on the midpoints in this way. Next example which is depends on a segment. Compare the segment means that which segment is greater than which segment here. So see, they give AB is equal to 5 centimeter,
BP is equal to 2 centimeter. AP is equal to also 3.4 centimeter. So compare this, which is greater than which here. First one we write greatest segment means that AB. After that AP. AP is less than AB. So we write here AP, and BP is a smallest segment in this way. So AB is greater than AP. AP is greater than BP. It's a comparison of segment, or separately we write it AB is greater than AP. Also AB is greater than BP. Here AP is greater than BP in this way. Okay, it's a comparison of segment. It depends on the length of a segment. Okay, see here our next concept, which is depends on the line segment, line, and also ray. So first we studied the ray means what. Okay, this symbol indicated that a ray is start from a origin like this, A and B. So it's a origin points. A ray is start from origin points and increase infinitely at one side only. So we read it ray AB, not a read रे बी ए. बी ए इस तरह से हम नहीं पढ़ सकते. रे को हम सिर्फ वन वे पढ़ेंगे, रे ए बी विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पॉइंट्स, ओरिजिन पॉइंट्स. ओके, सो ये कंसेप्ट अगर आपकी क्लियर है तो देखो एग्जांपल्स. राइट द नेम ऑफ अपोजिट रे ऑफ रे आरपी. मैं फिर से पढ़ता हूं, यहां पर देखने में थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको. राइट द नेम ऑफ अपोजिट रे ऑफ रे आरपी. सो सी हियर दिस इज रे आरपी and opposite ray of RP is in this way, which is starting from origin point R. So opposite ray of ray RP is RS or RT. एक ही है, अगर आप R से S तक पढ़ो, R से T तक पढ़ो, this ray goes to infinitely in this way. यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट लेकर हम ये रेज को पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं. So opposite ray of ray RP is, मैं यहां पर लिखूंगा, अपोजिट रे ऑफ रे आरपी इज रे आरएस और रे आरटी. एक ही है. आरएस पढ़ो चाहे तो आरटी पढ़ो, एक ही होगा. ठीक है, इस तरह से. राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे पीक्यू, पीक्यू एंड रे आरपी. अभी आरपी रे आरपी को अगर हम पढ़ेंगे तो रे यहां से स्टार्ट होगा और इस तरह से कंटिन्यू आगे जाएगा, उसको पॉइंट पी भी होगा और उसके आगे भी चले जाएगा. रे पीक्यू, पीक्यू को हम यहां से लेंगे और कंटिन्यू पढ़ेंगे. ठीक है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या हुआ. राइट द इंटरसेक्शन सेट. इंटरसेक्शन सेट में यहां से पी से लेके आगे तक दोनों रेज कैसे होंगे, कॉमन हो गए. सो इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे पी क्यू एंड रे आर पी इज रे पी क्यू. ये आपका आंसर होगा, रे पी क्यू. इंटरसेक्शन मतलब दोनों कॉमन. तो कॉमन कहां से, यहां से आर से आरपी अगर रे हम पढ़ेंगे तो आर P ये कंटिन्यू आगे जाएगा क्योंकि रे इज इंक्रीज्ड इनफिनिटली एट वन साइड ओनली. सो आर से निकला हुआ रे कंटिन्यू आगे जाएगा और P से भी निकला हुआ कंटिन्यू आगे जाएगा. तो यहां से P से निकले हुए दोनों भी रेज, इट्स अ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस टू रे. सो आवर आंसर इज रे PQ is a intersection set of these two ray. Third one, write the union set of ray PQ and ray QR. ray PQ, where is PQ? PQ and ray QR. इस तरह से ये PQ यहां से इधर गया और QR यहां से इधर गया. तो PQ में ये पार्ट और QR में ये पार्ट्स, इतना पार्ट्स दोनों में क्या है, कॉमन है. सो इट्स अ सेगमेंट. क्या होगा, सेगमेंट. यूनियन सेट. इट्स अ यूनियन सेट. दोनों का मिलके क्या होगा, है ना. तो
दिस इज ऑल पॉइंट ऑफ सेट लाइक P से लेके Q तक, ये जो रे PQ, यहां से मैं इसको पहले रफ करूंगा, ये फिगर है रे PQ, मैंने यहां से ड्रॉ किया, दिख रहा है आपको, ये हो गया रे PQ, है ना। और दूसरा रे QR, यहां से लेके रे QR, इस तरह से ये चलेगा इधर से, है ना। तो दोनों का यूनियन क्या हुआ, ये ऑल पॉइंट्स एंड इधर के ऑल पॉइंट्स, है ना। तो यूनियन सेट में ये कॉमन है, कॉमन मतलब इंटरसेक्शन, है ना। तो इंटरसेक्शन पॉइंट में हम एक ही यूनियन सेट में ये जो इंटरसेक्शन कंसेप्ट है हम एक ही बार लेंगे, है ना। तो यहां पर यहां से लेकर इधर कंटिन्यू, यहां से लेकर इधर कंटिन्यू, मतलब एक लाइन हो गई, लाइन PQ, लाइन PQ, और वी राइट इट लाइन QP। किस तरह से भी पढ़ो, लाइन QP पढ़ो, इधर पूरा हो जाएगा, लाइन PQ पढ़ो, दोनों साइड से लाइन दोनों साइड से इंक्रीज होती है, इस तरह से इसका आंसर लाइन QP होगा, ठीक है। स्टेट द रे ऑफ विच सेगमेंट QR इज अ सबसेट, स्टेट अ रे ऑफ विच सेगमेंट QR इज अ सबसेट, QR ये सबसेट है कौन से रे का, state the ray of which segment QR is a subset, segment QR is a subset of ray QR, आंसर क्या होगा, रे QR का ये सबसेट होगा ना सेगमेंट, है ना। सेगमेंट QR ये QR का भी सबसेट होगा और RQ का भी सबसेट हो सकता है, ठीक है। राइट द पेयर ऑफ अपोजिट रेज विथ कॉमन एंड पॉइंट R, अपोजिट रेज, इसका कॉमन पॉइंट क्या है, R, हियर कॉमन पॉइंट R, सो रे RP एंड रे RS एक पेयर हो सकती है, उसी तरह RP का मतलब RQ भी हो सकता है ना, रे RP तक पढ़ो चाहे RQ तक पढ़ो, तो रे RQ एंड रे RT ऐसे भी हो सकता है। तो हमने एक ही लिखा, रे RP एंड रे RS आर द अपोजिट रेज स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट R। Here write any two rays with common end point S, कोई भी टू रेज हमको लिखने हैं, उसका कॉमन एंड पॉइंट क्या है, यस है। सो इजी, यस से स्टार्ट करो, रे SR एंड रे ST in this way, these are a two rays starting from point S. Write the intersection set of ray SP and ray ST, रे SP एंड रे ST, इसका कॉमन पॉइंट्स कौन सा है, कौन सा इंटरसेक्शन पॉइंट्स है, कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट्स SP और ST। S इज अ ओरिजिन पॉइंट, है ना, यस अगर यहां से निकला तो ये ओरिजिन पॉइंट होगा यस, और ST के लिए ओरिजिन पॉइंट होगा यस। तो दोनों रेज में सिर्फ पॉइंट यस इज अ कॉमन पॉइंट, सो इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे SP एंड रे ST इज अ पॉइंट यस, ये आपका आंसर। इस तरह से रे, सेगमेंट एंड लाइन, इनके ऊपर डिपेंड से कंसेप्ट्स। सी हियर, यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 में आप अगर बुक में देखेंगे तो वहां पर आंसर कंफ्यूज करेगा आपको, वहां पर शायद कुछ रे या सेगमेंट ऐसा कुछ दिया है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर अगर क्वेश्चन रे PQ एंड रे QR है तो आंसर लाइन ही आना है, इसका यूनियन सेट रे PQ, ये कंटिन्यू उधर जाएगा, QR कंटिन्यू इधर होगा, तो इसकी एक लाइन फॉर्म होगी, और यहाँ पर अपना यूनियन सेट क्या होगा, लाइन होगा। या आप चेक कीजिए कि जैसा क्वेश्चन है उसके हिसाब से आंसर लाइन होना चाहिए, बुक में देखकर कंफ्यूज मत हो जाए, इस तरह से सॉल्व कीजिएगा।